हेलो, कैसे हैं आप सब? सॉरी, हमें यूट्यूब पे थोड़ा इशू हो गया है. इट इज़ नॉट गोइंग लाइव ऑन दैट फॉर सम रीज़न. So that is why we will be doing Facebook Live. We'll just wait for a few minutes for more and more people to join, and then we start. हाय, कैसे हैं आप सब? Thank you so much for joining in. Just a minute more and then we start. Ramadan Kareem to all of you. I hope you all are staying healthy and safe at home. Thank you so much for liking my earlier webinar that we did on COVID-19. And thank you so much for sharing it. And I hope it has helped you and your family members in some or the other way. So thank you so much for that. For any queries, I had also put the contact details of Dr. Zainab and Dr. Vyoma, so you can contact them. Even for post-COVID rehabilitation, you can contact Dr. Zainab on her website. Okay, so let us begin. Welcome all to Stretch Align and Move. Thank you so much for joining in. Ramazan Mubarak to each and every one of you. And I hope you all are healthy, wealthy. Okay, so coming to today's topic, we will be covering a very important joint today, जो हर रोज हर चीज में हमें काम आता है वो जॉइंट, और उसका वेयर एंड टेयर भी इतना ही जल्दी होता है. एंड नाउअडेज सो वी हैव सीन इवन टीन्स एंड यंगस्टर्स कमिंग विथ दिस जॉइंट पेन. ठीक है, तो मैं कौन से जॉइंट की बात कर रही हूँ? यस, यू गेस्ड इट राइट, इट इज अवर नी जॉइंट. Knee joint is used in almost all our activities, all our daily activities, be it walking, running, jogging, skipping, standing, sitting to standing. Each and everything requires the movement of the knee joint. तो अभी पेन भी इतना ही कॉमन है नी जॉइंट में, तो क्यों होता है पेन, किस लिए होता है, क्या कर सकते हैं वो पेन के लिए, वो सारी चीज़ें आज हम ये वेबिनार में कवर करेंगे. एंड टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस आई हैव विथ मी टुडे डॉक्टर मोहसिन. So Dr. Mohsin is... Hi, Dr. Mohsin. Hi, Dr. how are you? Thank you. Mohsin is an orthopedic surgeon. He is practicing in Dubai from last 6 years. Otherwise, he has been practicing from last 15 years. He is more into knee injuries, hip and knee replacement surgeries, orthopedic injuries, sports injuries, and so on. So welcome, Dr. Mohsin, and thank you so much for giving your time today. Thank you, Fazila. Thank you for having me. रमजान मुबारक डॉक्टर आपको. आपको भी रमजान मुबारक. ठीक है, so let's start with the questions because we have a limited time in hand. So डॉक्टर, पहला क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू यू what are the most common causes of knee pain? If you can, अगर आप different age groups में बता सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा. तो जैसे आपने कहा कि नी जॉइंट जो है ना is one of the most important joints in the body. It supports your daily activity, walking,
running, getting up. So if there's any problem in it, this is something that is will prompt you in the first place. For example, if you're waking up and getting out of your bed and you feel pain in the knee, and you will realize that there's a problem right away. जी So let's go to your question quickly and look at what the causes of knee pain are. So we जी can divide it in knee pain in children versus knee pain in adults versus knee pain in the elderly. So starting with children, so ओके many times you have children, they will come back uh, after playing sports or during the day and complain of knee pain, and especially children complain of knee pain during the night as well. जी So, most common cause of knee pain in children still remains overuse. Children are always playing and loading their joints all day long, and overdoing in sports, overdoing in activity, jumping, running, हम्म squatting, sitting on the floor, getting up. All of these things can cause overuse injury to the knee because still the bones are growing, and जी the spot at which the bone actually lengthens, जो कि growth plate इसको बोलते हैं, जी बोन के टॉप या लोअर एंड के अंदर सॉफ्ट बोन होती है जिससे बोन अपनी लेंथ इंक्रीज करती है ओवर टाइम एंड कोर्स जी ऑफ एजिंग प्रोसेस. जी तो उस सॉफ्ट पार्ट के ऊपर लोड पड़ता है, इट्स नॉट एज स्ट्रांग एज द बोन. सो जब भी ओवर एक्टिविटी होती है तो उस जगह पे लोड पड़ने की वजह से ग्रोथ प्लेट टेक्स द हिट. ठीक है, सो ये यस तो सबसे पहली और मोस्ट कॉमन रीजन है ऑफ पेन. हम्म उसके अलावा ये प्रॉब्लम भी नहीं है, ये तो ऐसी चीज है विच इज इजीली मैनेजेबल. नाउ वी वांट टू लुक एट थिंग्स विच नीड अटेंशन एंड वुड रिक्वायर यू टू कम टू अ डॉक्टर. तो जी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे थाई मसल्स का इम्बैलेंस है कि हम्म जो सामने के थाई का मसल है क्वाड्रिसेप, जो कि विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिस्पांसिबल फॉर योर वॉकिंग. तो उसकी इम्बैलेंस की वजह से जो नी कैप है उसकी ट्रैकिंग जो है वो बिल्कुल सही नहीं होती नी के सामने. कभी कभार जो नी कैप है इट्स क्वाइट लूज एंड चिल्ड्रन सफर फ्रॉम रिकरेंट सबलक्सेशन, यानी कि जोड़ से जो है वो नी कैप का आधा उतरना या फिर पूरा ही डिसलोकेट हो जाना. सो दिस इज वन प्रॉब्लम. एक हम्म जो नई चीज बहुत ही कॉमन है वो ओबेसिटी है. तब चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी करेक्ट वजह से इंजरीज बढ़ जाती हैं अगर चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द फ्लोर और सिटिंग इन वन पोस्चर. और रिसेंटली विद कोविड एक नई और बीमारी आ गई है विच इज बीइंग स्टैटिक एंड नॉट यस एक्सरसाइजिंग. They are यस sitting at home on a chair, attending their school all day long without this exercise. So their flexibility decreases. क्योंकि बच्चों को अगर आप देखें अमूमन भी चोटें कम लगती हैं. अगर उतनी जोर की चोट एडल्ट को लग जाए तो उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, जोड़ को चोट लगती है. बट बच्चों की हड्डियां क्योंकि एडल्ट से फ्लेक्सिबल होती हैं तो दे कैन टॉलरेट मच मोर ट्रॉमा देन एन एडल्ट कुड. तो सही लेकिन विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी यू विल लूज दिस एबिलिटी. तो दिस इज हम्म अनदर रीजन. फिर उसके बाद बड़ी चीजें हैं जैसे कि कोई डायरेक्ट इंजरी है जो कि पेन कर सकती है, इसकी वजह से लोग आते हैं, जैसे कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी है. कभी कभार रिकरेंट पटेलर डिसलोकेशन की वजह से पीपल वुड कम टू डॉक्टर. ठीक है. दैट फिर इज कुछ दैट इज वो चीज डॉक्टर ऐसी है कि वो आपको पता चलेगी मतलब ओके यू आर फॉलिंग डाउन और यू आर प्लेइंग समथिंग यू आर ट्विस्टिंग ऑन योर नी एंड यू आर गेटिंग द पेन बट जो बिल्कुल आगे जो चीजें बताई है growing pain and all because that even I have experienced in my house with my son and all so that is a बिल्कुल very good point that you have covered doctor बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, अब कुछ रेयर चीजें रह गई जो कि इम्पोर्टेंट है, रेयर बट इम्पोर्टेंट. जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो कि बच्चों में भी हो सकता है. ठीक है, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन बी सीन इन चिल्ड्रन. अगर आपका बच्चा बार बार घुटने के दर्द की कंप्लेन कर रहा है या डिफरेंट जोड़ों के दर्द की कंप्लेन कर रहा है, स्टिफनेस की, और उसमें जोड़ों में स्वेलिंग होती है, कभी एक जोड़ में कभी दूसरे जोड़ में, तो दिस इज समथिंग दैट शुड प्रॉम्प्ट यू टू सी समवन टू इवेल्युएट कि ये वजह क्या है. सिर्फ उसको ग्रोइंग पेन कह के वी कैन नॉट just leave it like that. फिर हम्म एक आखिरी बात, बोन ट्यूमर्स जो कि रेयर होते हैं बहुत ही, मे बी 1 in a million और मोर देन दैट, ज्यादा उनकी कम इंसिडेंस होती है. लेकिन उनकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि वो बच्चों की एज में सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं. ठीक ओके है, तो ट्यूमर्स लाइक ऑस्टियोसार्कोमा, ट्यूमर्स लाइक हम्म यूविंग सार्कोमा, ये जो है वो छोटी उम्र में, मतलब 5 से 10 और 13-14 साल की उम्र में बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं. हम्म वैसे जनरली रेयर है लेकिन इन एजेस में.
तो एक उसकी कोई स्वेलिंग अगर आपके घुटने के इर्द गिर्द है या आपकी और ये होते भी नी के करीब है इस तरह के ट्यूमर्स, जी तो जी। कभी ऊपर नी के या कभी नीचे वाली हड्डी में। तो अगर आपको नी में स्वेलिंग नजर आए जो कि हार्ड है, जो कि बढ़ रही है साइज में, या रात के वक्त सोते हुए मरीज दर्द दर्द की कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये चीज है हम्म। जो कि आपको प्रॉम्प्ट करना चाहिए टू गो टू अ डॉक्टर टू एटलीस्ट गेट इट इवैल्यूएटेड, खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की चीज तो नहीं है। जी जी। ठीक है, आई थिंक दैट्स क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव अबाउट Yeah, forgive. नी That's a पेन। lot of information. Yes, doctor. क्योंकि बातें तो बहुत है करने के लिए, बट दिस इज जनरली जी जी। व्हाट। ठीक है, उसके बाद जो है एडल्ट्स की बात करते हैं। तो हम्म अगर आप चाइल्डहुड से निकल के एडल्टहुड में आ गए एंड यू डिडंट हैव अ क्रॉनिक प्रॉब्लम और पेन, तो यूजुअली कम ही रीजंस हैं नॉन ट्रॉमेटिक जो कि एडल्ट लाइफ में होती हैं। तो एडल्ट हम्म। लाइफ में ज्यादातर कॉमन चीजें स्पोर्ट्स इंजरी, जिसमें आपके पास एसीएल इंजरीज आती हैं, या नी के दरमियान दो डिस्क्स होती हैं जिसके ऊपर नी कंफर्म करता है कि ऊपर की जो थाई की बोन होती है वो राउंड होती है, नीचे टिबिया इज फ्लैट। हम्म। उस कंफर्मेशन के लिए जो आपकी डिस्क है उसके अंदर इंजरी, उस जिसका नाम मेनिस्कस है, तो मेनिस्कस इंजरीज आर कॉमन। ठीक है, जी। उसके अलावा बड़ों में भी ओवर यूज पेन्स होती हैं, जैसे कि नी के इर्द गिर्द जो लुब्रिकेशन की मैकेनिज्म्स हैं, बर्सास कहते हैं उनको, तो उसमें उसमें इन्फ्लेमेशन, बर्साइटिस, स्वेलिंग्स, पेन, ये कॉमन है। ठीक है, जी। उसके बाद जो लोग एक्टिविटी में बहुत मतलब एंथुजियास्टिक हैं, रनिंग में है, तो उनको नी के इर्द गिर्द इलियोटिबियल बैंड के पेन हो सकता है, तो दैट वुड हम्म प्रॉम्प्ट समवन टू कम। और उसके हम्म। अलावा फिर कुछ लोगों को मैल अलाइनमेंट की वजह से, कि उनके घुटने या टांगे सीधी नहीं है, तो उनके घुटने के किसी एक खास हिस्से में ज्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से वो हिस्सा जल्दी घिसने लगता है, जो कि नी हम्म कैप भी हो सकता है, या जो हम्म फेमोरल कॉन्डाइल है या टिबियल कॉन्डाइल है, जो कि घुटने के हिस्से हैं, तो उनमें हम्म। अगर वो जल्दी घिसने लगे हैं, तो पुअर अलाइनमेंट की वजह से अर्ली ऑन ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, जो जी बेसिकली तो बुढ़ापे की बीमारी है, जी। लेकिन जवानी की उम्र में भी हो सकती है अगर आपकी टांगें सीधी नहीं है तो। ठीक है ना। डॉक्टर, एक चीज मुझे सिर्फ ऐड करनी थी इसमें, जो आपने कॉजेज बताए उसमें फ्लैट फीट आल्सो इज वन ऑफ द कॉज, जो आपने मैकेनिकल चीजें बताई, बिल्कुल बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट एंड बिल्कुल, ऑल। क्योंकि मैल अलाइनमेंट जो है वो डायरेक्टली फ्रॉम द हिप डाउन टू द नी टू द एंकल, किसी भी एरिया का अपना नॉर्मल पोजीशन में ना होना वुड बी मैल अलाइनमेंट फॉर द लोअर लिम्ब। ठीक है ना, तो कोई हम्म। भी इनमें से चीज, अगर हिप खराब है तो भी नी में पेन हो सकता है, नी खराब है तो हिप और एंकल दोनों में पेन हो सकता है, और वाइस वर्सा, अगर आपके एंकल में प्रॉब्लम है या फ्लैट फुट है, तो दैट वुड कॉज एक्सेसिव प्रेशर ऑन योर नी ऑन वन साइड एंड इट कैन स्टार्ट टू कॉज अ पेन। ठीक है, परफेक्ट। जी उसके डॉक्टर। अलावा एक चीज रह गई कि जो है वो जो डाइटरी चीज है इसमें हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का ज्यादा होना कैन हम्म कॉज इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट। ठीक है, जिसका नाम हम्म। है गाउट। तो कई लोग गाउट आर्थराइटिस के साथ, कुछ लोग जो है वो प्रेजेंट करते हैं, इसमें एक्यूटली जॉइंट स्वेल कर जाता है और उसमें हम्म पेन होती है, रेडनेस होती है, चलने में तकलीफ होती है, तो आप वजन नहीं डाल सकते। तो हम्म। ये चीज जो है दैट इज अनदर वन। ओके। ठीक है, तो ठीक है। आफ्टर एडल्ट और एडोलसेंट मतलब एडल्ट लाइफ, फिर बात आ गई एल्डरली की। तो हम्म एल्डरली में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जी। जो नॉर्मल एज के साथ जॉइंट का वेयर टेयर है, तो हम्म। इसमें यही होता है कि जो जॉइंट के सर्फेसेस हैं जो कि कार्टिलेज सॉफ्ट बोन से बने हुए होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता यूज के साथ साथ जो है उनकी थिकनेस वो नहीं रहती, और जैसे जैसे वो थिन होते चले जाते हैं, तो हम्म जो हार्ड बोन है वो निचले सरफेस की जो हार्ड बोन है उससे लगने लगती है, तो हम्म। जिसकी वजह से फिर जो है वो जॉइंट मूवमेंट में पेन होती है। पेन की वजह से एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट होती है, जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, जैसे जैसे रेंज ऑफ मोशन कम होता है पेन और बढ़ता जाता है। सो जी। it's a vicious cycle, starts with pain, then follows by decrease in range of motion, और फिर हम्म इवेंचुअली मोर एंड मोर पेन, और फिर उस पेन की वजह से और ये इस जोड़ के घिसने के अमल से जरूरी नहीं है कि वो दोनों सरफेस एक बराबर घिसे, अगर एक तरफ से ज्यादा लॉस है तो उस सूरत में ये होता है कि फिर मैल अलाइनमेंट भी शुरू हो जाती है, कि घुटना जी सीधा नहीं रहता, पहले सीधा था जवानी में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो है वो बेंड होने लग जाता है। जी जी। तो परफेक्ट। ओवरऑल ये कॉजेज हैं। एल्डरली हम्म में एक और कॉज मेरे जहन में फिर आगे है, वो भी मैं आपको बता दूं कि पीपल विद क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज है,
तो हम्म उसमें या लो इम्यूनिटी है, तो उसके अंदर सेप्टिक आर्थराइटिस एक प्रॉब्लम है कि जॉइंट का इन्फेक्शन हो जाना। ठीक है। हम्म और ये हम्म जॉइंट का इन्फेक्शन जो है वो एक इमरजेंसी होती है, जिसको प्रॉम्प्टली हैंडल ना करें तो पूरा का पूरा जोड़ का कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। तो जी वो जोड़ अगर एकदम से सूज जाए या लाल हो जाए और बुखार है साथ, और जोड़ हम्म पे वजन ना पड़े और जोड़ मोड़ने में भी तकलीफ हो, तो उस सूरत में जो है वो ये साइन है सेप्टिक आर्थराइटिस, दैट शुड बी डेल्ट विद इमीडिएटली। ओके ओके परफेक्ट आई थिंक काफी सारे आपने कॉजेज बता दिए हैं सो आई वुड लाइक टू टेल द व्यूअर्स प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड ये सारी चीजें तो वैसे भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो इट इज हिज जॉब टू टेल यू कि क्या किसकी वजह से हुआ है बट डॉक्टर मोहसिन हैज गिवन जस्ट अ जनरल आइडिया कि नी पेन होता है तो प्लीज डोंट कीप ऑन बेयरिंग द पेन at some point you have to come and see the doctor. So that takes me to the next question, doctor. When is the right time to see the doctor for knee pain? So, right time to is usually based on patient's symptoms. ठीक है। सवाए एक चीज के कि recent injury है, अभी अभी चोट लगी है और you don't know कि किस magnitude की चोट है, और if you cannot bear weight on your leg, it's best to get evaluated, ताकि कोई ऐसी चीज जो कि internally damage हो गई है, आप उसके ऊपर चलते नहीं रहे, and then later on you find out कि you've caused more damage than you started off with. Yes. That's one. So most important thing would be inability to bear weight, कि आप Hmm. घुटने के ऊपर वजन डालने की कोशिश करें, आपसे वजन ना डालें। ठीक है। जी. तो ये जरूरी बात है। फिर दूसरी बात है सिग्निफिकेंट पेन, कि पेन है, रेस्ट के ऊपर पेन है या मूवमेंट पे पेन है। फॉर एग्जांपल, बैठे हैं तो उठ नहीं सकते, ठीक है, उठे Hmm. हैं तो बैठ नहीं सकते, चलने की कोशिश कर रहे हैं तो स्टेप्स लेने में तकलीफ है, स्टेयर्स जी. क्लाइंब करने की कोशिश करें तो उसमें दर्द है। तो जी. ये चीज शुड प्रॉम्प्ट यू टू कम टू अ डॉक्टर। और मतलब ठीक है, अगर कुछ घंटों की दर्द है तो मे बी नॉट, बट अगर ये स्पैन्स ऑन डेज एंड वीक्स, देन यू मस्ट बी इवेल्युएटेड। फिर जी. स्वेलिंग, Hmm. चाहे वो सॉफ्ट स्वेलिंग है चाहे वो हार्ड स्वेलिंग है, तो वो स्वेलिंग जो है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि ट्यूमर, सेप्टिक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब चीजों में स्वेलिंग जो है वो इज अ मेजर साइन। और ये इस तरह की बीमारियां जिनको कुछ ना कुछ इलाज चाहिए, तो जी. ये दे शुड बी सीन। फिर ओके. जॉइंट के इर्द गिर्द रेडनेस होना, जॉइंट का ओके. टेम्परेचर ज्यादा होना, हाथ रखें दूसरी बॉडी से अगर जॉइंट ज्यादा गर्म है या साथ बुखार हो रहा है दर्द के, तो वो इम्पोर्टेंट। फिर Hmm. लॉकिंग एक कॉमन सिम्टम है जो कि मेनिस्कस इंजरी के साथ मिलता है, कि आप Hmm. बैठ के उठने की कोशिश करें तो आपका घुटना एक सर्टेन पोजीशन में लॉक हो गया है। Okay. अगर अगर फ्लेक्स्ड है तो एक्सटेंड नहीं हो रहा, एक्सटेंड है तो फ्लेक्स नहीं हो रहा, तो लॉकिंग शुड बी रीजन टू कम एंड सी द डॉक्टर। Okay. फिर Oh. अगर जोड़ में से आवाजें आती हैं, क्लिक कर रहा है जॉइंट, ठीक है, Hmm. अगर बगैर दर्द के क्लिकिंग जो है वो कई बार कुछ लोगों के जॉइंट्स की नॉर्मल फिजियोलॉजी का हिस्सा है, बट Hmm. अगर दर्द है और क्लिक हो रहा है और लॉकिंग हो रही है, तो दिस इज अ थिंग टू गो टू द डॉक्टर फॉर। ये बहुत फिर अच्छा पॉइंट था डॉक्टर आपने सॉरी टू इंटरप्ट यू बिकॉज ये काफी सारे क्वेश्चंस जब पेशेंट्स हमारे पास भी आते हैं तो ये रहता है कि हमारे आते हैं किसी और चीज के लिए बट देन दे इवेंचुअली पॉइंट यू टू कि हाँ नी में थोड़ा ग्रेटिंग साउंड आ रहा है जो हमारी लैंग्वेज में हम ग्रेटिंग साउंड बोलते हैं तो ग्रेटिंग जी जी साउंड आ रहा है तो उसका क्या करना है इज इट नॉर्मल या तो कुछ प्रिवेंशन उसका करना है कि नहीं सो दैट यू हैव नोटेड वेरी वेल कैन यू जस्ट रिपीट दैट पॉइंट डॉक्टर बिल्कुल। सो सो क्लिकिंग साउंड की हम बात कर रहे थे कि नॉर्मल क्लिकिंग साउंड्स कुछ लोगों के जोड़ों में होती है, जैसे आप उठ के बैठ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो रुकू से सजदे में जा रहे हैं, सजदे से उठ रहे हैं, तो इस तरह की आवाज आना, ये इट कैन बी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एज वेल। लिगामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्नैप करते हैं, या फ्लूइड नी के एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है। इसकी कई थियरीज हैं इस आवाज के जी आने की, लेकिन अगर दर्द नहीं है और आवाज है, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम मोस्टली। ओके ओके और ओके आखिरी point मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि इंस्टेबिलिटी इज 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 एन अदर थिंग। फॉर एग्जांपल, आप खड़े होने की कोशिश करें और आपका नी बकल करता है, या आप चल रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि घुटना आपके बॉडी के नीचे से आगे या पीछे निकल जाएगा, तो Hmm. ये सीरियस लिगामेंट इंजरी की निशानी है, और जी ये दिस शुड आल्सो प्रॉम्प्ट यू टू कम एंड सी अ डॉक्टर। Hmm. Perfect perfect okay I just want to tell all the viewers please any questions you can just put it in the comment section and we'll just take the questions in between okay doctor that takes me to the third question इसके आंसर्स बहुत सारे होंगे बट जस्ट इन जनरल इफ यू हैव टू एक्सप्लेन what are the treatment options for knee pain ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन व्हाट द प्रॉब्लम इज। फर्स्ट जी थिंग इज डायग्नोसिस। अगर
सिर्फ ओवर यूज की वजह से है तो ऑफ कोर्स स्लोइंग डाउन द एक्टिविटी and then learning exercises to do proper range of motion exercise, do proper जी। stretching before you start an activity. अगर हम्म। उससे ज्यादा कोई बात है, फॉर एग्जांपल अगर लिगामेंट इंजरी है या मेनिस्कस इंजरी है, तो उस सूरत में एक्सटेंट ऑफ दैट कैन बी फाउंड आउट बाय एग्जामिनेशन, एमआरआई। जरूरत है तो उसकी सर्जरी होती है, जैसे कि आजकल की होल सर्जरी कर सकते हैं जिसको आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं। बड़े जी। कोई कट नहीं लगते, लेकिन छोटा सा कैमरा डाल के यू कैन विजुअलाइज द इनसाइड ऑफ द नी एंड डू हम्म। मेनी थिंग्स। हम्म। इसी तरह पहले एसीएल रिकंस्ट्रक्शन बहुत बड़े ऑपरेशन के जरिए होती थी, वो भी अभी इन्हीं मेथड से हो सकती है। और उसके ओके। अलावा सो ऑन एंड सो फोर्थ, जैसे क्रॉनिक बीमारियां, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये दवाओं से इसका इलाज होता है। और हम्म। अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो शुरू में दवाओं से इलाज कर सकते हैं, और फिर यू कैन गो एज फार एज डूइंग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी फॉर दिस। Okay, perfect. So, doctor, when should they go for physiotherapy in these cases? Physiotherapy, again, it depends when you have restriction of range of motion and especially loss of muscle strength. क्योंकि जो कि जनरल प्रॉब्लम्स हैं ऑफ व्हेन यू स्टार्टिंग एन एक्टिविटी या ऑफ नॉट डूइंग एन एक्टिविटी एंड देन ट्राइंग टू स्टार्ट एन एक्टिविटी, तो वो चीजें फिजियोथेरेपी से आसानी से हल हो सकती हैं। और स्पेशली छोटी मोटी लिगामेंट इंजरी होती है, तो वो भी अगर मसल स्ट्रेंथनिंग कर लें तो यू कैन ऑफलोड दोज एरियाज टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ अराउंड द नी। इसी तरह इंस्टेबिलिटी में, इसी तरह रिकरेंट पैटेलर डिसलोकेशन में आप इनिशियली फिजियोथेरेपी से treatment कर सकते हैं with muscle strengthening and all. If they Hmm. don't work, of course, then there is surgery and then there is more things to do about it. But generally, physiotherapy can help in a lot of situations. जिसमें Hmm. muscle strength नहीं है, जिसमें range of motion नहीं है. Even in osteoarthritis, it is seen that if you improve the strength of the muscles and increase the range of motion, ये एक तो उसी disease के लिए भी बेहतर है, Yeah. और आपकी symptoms को बेहतर करती है। और दूसरी बात ये कि अगर for example, if you will end up in an like an orthopedic procedure, like a knee Hmm. replacement surgery, so Hmm. if you start with a good strength, your results will be much better than when Yes. you start with a poor muscle strength. Absolutely, absolutely. That is very good of you that you told that because काफी सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं सर्जरी के पहले भी रेफर होते हैं फिजियोथेरेपी के लिए सो मे बी Mm. तभी उनको इतना कुछ फर्क नहीं होता है फिजियोथेरेपी से बट द स्ट्रेंथनिंग दैट इज हैपनिंग डेफिनेटली हेल्प्स लेटर ऑन पोस्ट सर्जरी Exactly, रेकवरी में। exactly. और दूसरा ये पॉइंट था कि व्हेन द नी एक्सरसाइजेस जो भी बताई है आप सबको जो भी मतलब जिसको भी नी इश्यूज है और ऑलरेडी फिजियो के पास गए हैं और आप नी एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो नी एक्सरसाइज प्लीज कीप ऑन डूइंग डोंट स्टॉप इट व्हेन द फिजियोथेरेपी स्टॉप्स बिकॉज हम 7 दिन में या 10 सेशन में we cannot make any difference. We are just there to show you the exercises and then once you have the exercises with you, keep on doing that. Then only the strengthening will keep on happening. Okay, so I just wanted to make that point. Yeah, I always tell the patients कि फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ दिन में 30 मिनट मिलेगा, और 23 घंटे और 30 मिनट बॉडी आपके पास है, so do good to it. Yes, yes, absolutely, Nectar. बिल्कुल, Absolutely. बिल्कुल। Okay, so that takes me to the fourth question. That is, we always say, Doctor, कोई भी situation में that prevention is always better than cure. So, any tips on how to take care of the knee in general? सो इस क्वेश्चन के ना दो आंसर देने हैं। एक तो पहला ये कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं ऑफ डेवलपिंग दीज नी पेन, ठीक है ना। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आजकल के जमाने में जो है ना, ओबेसिटी इज नंबर वन प्रॉब्लम फॉर कॉजिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, नी पेन है। So excess weight. If you have Hmm. excess weight, one should work on losing that weight. You, अगर आपको arthritis है, नहीं है, knee pain है, नहीं है, तो हर सूरत में excess weight is a big risk factor for all of these problems, including knee pain. ठीक है? So हाँ, अगर आपको pain है, तो usually we suggest कि losing 5 to 8% of your body weight can increase significantly in a patient आपका suffering आवाज from knee कट रहा pain. था मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका किसी को नी जी अगर किसी को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसके लिए भी 5 से 8% अपने वजन को कम करने से सिग्निफिकेंटली फर्क पड़ता है उसकी दर्द में। ठीक है। दूसरी बात यह है कि दूसरा रिस्क फैक्टर है लैक ऑफ मसल स्ट्रेंथ। ओके। वी आर एक्साइटेड टू स्टार्ट एक्सरसाइजेस, लेकिन वी हैव टू डू एक्सरसाइजेस एज मच एज द बॉडी कैन टॉलरेट। अगर आपकी लो मसल स्ट्रेंथ है और आप एकदम से हाई
जो है वो इंटेंसिटी फिटनेस ट्रेनिंग में फौरन पहुंच जाएंगे, यू विल जस्ट एंड अप इन इंजरीज एंड इन पेन्स अराउंड द जॉइंट, फिर आपसे वो भी नहीं होगा जो आप करने निकले थे पहले। तो इस सूरत में ये है कि जो भी आप स्पोर्ट्स शुरू करें, जो भी करें, तो उसके अंदर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, स्पेशली उस एरियाज में जो कि स्पोर्ट इन्वॉल्व है, स्पोर्ट में शोल्डर के लिए, फुटबॉल में नी के लिए, कोई भी नी के लिए खेलते हैं, जो भी है, तो उसके अंदर ये चीजों का ख्याल रखें। फिर कोई अगर आपको पुरानी इंजरी है और आप कोई नई एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं, तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू गेट दैट प्रीवियस इंजरी इवेल्युएटेड बिफोर यू गेट इनटू समथिंग न्यू, so that if there is a risk starting that, somebody will inform you on that. दूसरा ये कि अगर विजिबली आपके जोड़ या टांगे या बाजू सीधे नहीं है, तो और आप कोई नई एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, सो थिंक अबाउट दैट। ठीक है, सो ये सब चीजें करना ऑटोमेटिकली आर पार्ट ऑफ द प्रिवेंशन। जी, तो अब डॉक्टर जो आपने बताया कि कोई, हाय डॉक्टर, आर यू विद अस? ओके, सो डॉक्टर जैसे आपने बताया कि कोई भी नई एक्टिविटी स्टार्ट करे तो प्लीज गेट योर सेल्फ इवेल्युएटेड, अदरवाइज ऑल्सो, बिकॉज डॉक्टर क्या होता है, अभी हम देख रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन है तो सबको वेट का इशू रहा ही है, किसी का बड़ा है, किसी का ये वो, सो पीपल हैव स्टार्टेड व्हाट दे आर डूइंग इज वट एवर जिम अवेलेबल है या घर पे किसी ने वीडियो भेजा है तो दे स्टार्ट डूइंग दोज heavy workouts also without knowing that what is the capacity of their body, and then they land up into these knee issues, foot issues and back issues and all. So that is a very good point that Dr. Mohsin has mentioned, that please um, be mindful of what exercise you are starting and select something which you can do it for a long time, not just a short term goal कि अभी थोड़े दिन करना है या सिर्फ एक वीक करना है या सिर्फ मेरा वेट लूज हो जाए तब तक करना है. प्लीज डोंट डू दैट. Select something which is comfortable to your body, and then you can prolong it for a long period of time. So, and I guess Miss Nazish has also asked the same question, what is the impact of weight on the knee? So I guess Dr. Mohsin has already answered that question. Yes, doctor, please begin. Quick rundown on a list of preventions. So like I said, before starting an exercise, warm up, do stretching exercises. That is much more important than doing strengthening exercises when you begin something. Yes. Okay. So even for your children, when they're starting some kind of an exercise, be mindful that they're not just getting into the exercise. And if it's painful, try to tone down the exercise. Pain is your body's method of telling you that you've had enough. Okay, so take it easy. Okay, so किसी भी एक्टिविटी के लिए दूसरी चीज है प्रॉपर गियर. So footwear is very, very important. People start walking, running without the proper shoe wear, जिसकी वजह से भी you will get pain, because whenever you're running, walking, when you land, you create a thump to your body, and knee is a primary shock absorber in that thump. So if the injured or it's not injured, even if it's normal, you don't want to excessively load it. So proper shoe wear, and then if you're running or if you're walking, it's better to walk on soft surfaces. So proper created walking areas or jogging tracks which are soft and either made out of sand or gravel. Those are much better than trying to run and walk on concrete. Okay. Weight reduction, I already said. Then work on flexibility of your joints. And most importantly, whatever you start, do it regularly. So regular exercise will help. If you think of working out for 20 minutes, do it daily, or at least 3 to 4 times a week. If you're already osteoarthritic, or if you have knee pain, so you're allowed to exercise. Just exercise as much as you can tolerate. So say 20 minutes, not 20 kilometers, not how quick or how far, just how much. So this is more important. I think this should be the take-home message. Okay. It was really great. Doctor, अभी लास्ट एक क्वेश्चन है. यूजुअली हर ये सबको कंफ्यूजन रहता है कि व्हेन डू वी यूज हॉट पैक एंड व्हेन डू वी यूज कोल्ड पैक, और हर डॉक्टर के पास या फिजियो के पास उसका अलग अलग आंसर रहता है. सो अकॉर्डिंग व्हेन शुड वी यूज व्हाट? So it remains controversial, and no one has a perfect answer. But few things still you can say. Number one, acute injuries and joint injuries. Usually, icing and cold pack helps, even with osteoarthritis,
because there is some inflammatory element in it. So inflammation is better controlled with ice packs and applying cold. जी Now, chronic problems like muscle sprains, strains, stiffness is better with a hot pack because if you're trying to exercise, starting for example with stiffness, you're starting जी range of motion exercises. So in that case, warm is better. But in ओके acute injuries, cold is better. And ओके and and like there are now hot and cold therapies used हाँ both together, one by one after the other. So all of यस these things are there. But basically, for example, if you have an acute injury, you've fallen, you've got a swelling, ice it. If you have जी chronic problem like back pain, muscle ache, warm is better. okay okay perfect doctor so okay we have one question we'll just take that what is your idea about knee support braces in arthritis? Is it helpful? If so, how many hours a day we can use it? So, Metal. many knee support braces have been made. Now, braces are soft braces, hard braces. Some are geared towards correcting your alignment. For example, if you have a bow in the leg, some of these have tried to correct it. As far as the international consensus on using braces, by guidelines, they are not completely supported. For some patients, they will work. For some, they don't. As far as science is concerned, only those things which are consistently helpful are acceptable. But anyway, in certain conditions, when you have a slight deformity, moderate arthritis, braces can help. So, Hmm. and the second part of the question, if and when you have to wear them, so better wearing them on only when you're weight bearing. So for walking, okay, but Hmm. not while you're resting, not while you're sleeping, Hmm. because Hmm. then they can create Hmm. problems with blood circulation as well if they're too tight. And then Hmm. choosing an appropriate brace for yourself is also very important. Not too Yes. tight, not too loose, and then that can be helped with by the doctor that you're seeing. So they can Hmm. explain to you which brace will help for you, be Yeah. helpful for you. Yeah, usually ये भी problem होता है कि if it doesn't fit you, you just try to put that Velcro very tight and wear it, Hmm. and then you don't find any relief in the pain, and then you come back and tell us that अच्छा pain तो गया ही नहीं है मेरा ये brace डालने के बाद भी. So that is a very good point. कि please try it and then only buy it. Okay? Now, remember that brace is a medical device. So, जी a proper prescription of what you need. Ligament injury है, तो कौन सी ligament injury है और उसके हिसाब से there's a specific brace. ACL के लिए फरक brace है, collateral ligaments जो lateral medial हैं उनके लिए अलग brace है, हम्म post op कुछ और brace use करते हैं, injury के वक्त कुछ और, sports खेलने के लिए कुछ और. So it kind of depends on what kind of support is required. So someone who understands your problem should be the one advising you on which brace to get. जी जी perfect perfect okay so guys you can keep your questions coming we will just switch to exercises now I will take all the questions in the end again if you have any doctor will be with us till the end as of now I will just start some exercise session where I will show around 4 to 5 exercises basic knee exercises that you all can do on a daily basis okay so I'll just put my camera on the back side. Okay, so for the knee exercises, I just want to tell you that only when you don't have an acute pain. जैसे आप डॉक्टर ने अभी बताया कि अगर आप गिर गए हो स्वेलिंग हुआ है या बहुत ही सीवियर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में आप ये वाली एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे ठीक है तो उस कंडीशन में आपको पहले डॉक्टर को ही दिखाना है और ये एक्सरसाइज ट्राई नहीं करनी है ये एक्सरसाइज है जनरल नी पेन के लिए जिसको ऑलरेडी ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोसिस किया गया है या जिसको लेट्स से आफ्टर द किड्स एंड ऑल आफ्टर देयर एक्टिविटीज एंड ऑल दे फील लिटिल बिट पेन इन द नी एंड ऑल तो उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइजेस ठीक है तो आज मैं आपको 4 से 5 ही एक्सरसाइजेस दिखाने वाली हूँ उसके बाद आई विल जस्ट मेक अ वीडियो ऑफ ऑल द एक्सरसाइजेस इन वन वीडियो एंड आई विल पोस्ट इट लेटर ऑन ठीक है तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे एंकल से तो एंकल को
जैसे डॉक्टर ने बताया कि एंकल की मोबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है नी के लिए, बिकॉज दीज जॉइंट्स आर आल्सो कनेक्टेड टू द नी. सो द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज मेक श्योर कि आपका एंकल का जो आगे और पीछे का मसल है वो टाइट नहीं है. तो उसके लिए ये एक्सरसाइज है. Okay, so you just do ankle, pushing your foot down, pulling your foot up, pushing your foot down, pulling your foot up. तो ये आप कोई भी पोजीशन में कर सकते हैं. आपको चेयर पे बैठ के करना है, लेट के करना है, इट इज अप टू यू. यू कैन डू इट इन एनी पोजीशन. ठीक है. The next is circling the ankle. So circling the ankle is this. You can do one by one or you can do together. काफी सारों को प्रॉब्लम होता है, जैसे हम पेशेंट देखते हैं तो दोनों एक साथ नहीं कर सकते वो. So it's fine, you can do one at a time. So clockwise and then it is anti-clockwise. Okay? कितनी repetitions करनी है? Around 10 repetitions and once or twice in a day is enough. ठीक है? Okay. The next is for the knee, you can take a small roll like this. कोई भी towel का roll ले लीजिए and you just need to put it below the knee. ठीक है. ऐसे रखना है, कमर को सीधी रखनी है, स्ट्रेट बैठना है. एंड ये जो नी का बोन है, जो नी कैप है, उसको सिर्फ नीचे दबाना है. ठीक है. नीचे दबाते वक्त ये ध्यान रखो कि ये ऊपर, पैर ऊपर नहीं आना चाहिए. सो इट इज जस्ट दिस नी गोइंग डाउन. प्रेस इट. अगर सही से प्रेस कर रहे हो तो ये वाला जो मसल है वो टाइट होगा. ठीक है. सो प्रेस इट, होल्ड इट, 1 2 3 4 5 एंड रिलीज. So press it down, hold it, 1 2 3 4 5. और एक चीज, बहुत जोर से नहीं दबाना है कि आपको बटक्स और पूरा लेग मसल्स टाइट हो रहा है वैसा लगे. नहीं, इट इज ओनली दिस टॉप मसल दैट इज वर्किंग. सो व्हेन यू डू इट करेक्टली, इट इज ओनली दिस वर्किंग. सो होल्ड इट, 1 2 3 4 5. और काफी सारे लोग ऐसे भी करते हैं जब हम सिखाते हैं. सो दे जस्ट कीप ऑन डूइंग लाइक दिस. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑफ नो यूज. तो अगर करना है सही से तो उसको दबाइए नीचे और होल्ड करके रखिए. ओके. सो होल्ड इट, 1 2 3 4 5 एंड रिलीज इट. ठीक है. नेक्स्ट है, अगर आपके पास, मेरे पास ये छोटा सा बोल्स्टर है, अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है, यू कैन यूज दैट सिलेंड्रिकल पिलो जो यूजुअली घरों में रहता है सोफे पे रखने के लिए. अगर वो भी नहीं है तो यू कैन यूज अ स्मॉल बॉल अराउंड 22 सेंटीमीटर डायमीटर का, इतना सा बॉल रहता है, वो यूज कर सकते हैं. अगर वो भी नहीं है तो यू कैन यूज अ पिलो, फोल्ड इट इनटू हाफ एंड पुट इट बिलो द नी लाइक दिस. ठीक है. कितना ऊपर होना चाहिए नी? अराउंड 5 to 10 डिग्रीज बेंड होना चाहिए, बहुत भी ऊपर नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो ऐसे रखना है एंड देन यू जस्ट हैव टू लिफ्ट योर लेग. इसके ऊपर से लिफ्ट नहीं करना है. ओके. यू जस्ट हैव टू pull till the foot comes in line with the knee. That's it. ठीक है. तो आराम से बैठना है, या तो लेट के भी कर सकते हैं ये एक्सरसाइज. You just have to sit straight, put a bolster below the knee, lift the lower leg and pull the foot towards you. Hold. 1 2 3 4 5 and relax. ठीक है. Next. 1 2 3 4 and 5. Once again, 1 2 3 4 and 5. Okay. Fine. Next है, both the legs straight. बोल्स्टर चलेगा, नहीं तो पिलो भी चलेगा. You just have to put it in between the knees. ठीक है. और नीज को अंदर दबाना है और नीचे भी साथ में दबाना है. So the movement will be in and down at the same time. ठीक है. So in and down. See, if you see from the side, my knees are getting straightened more. So in and down, and then you try pulling the ball or the bolster or the pillow out of your grip. So 1 2 3 4 5. This is basically for inside of the knee muscles. ओके. उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, और ये जो ऊपर का एक साइड का मसल रहता है जिसको हम वीएमओ बोलते हैं, उसके लिए. तो ये दोनों चीजों पे काम करता है. फाइन. ये दोनों चीजों पे काम करेगा. और ये वाली एक्सरसाइज जो बताई वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नी का जो मसल रहता है, जो जल्दी वीकनेस में चला जाता है इफ देयर इज एनी पेन और इंजरी और एनीथिंग टू द नी. सो टू स्ट्रेंथन दैट पर्टिकुलर मसल, दिस इज द एक्सरसाइज.
और अगर कंबाइन करना है, so this is the one, in and down, 1 2 3 4 and 5. ठीक है, so in down and try to pull 1 2 3 4 and 5. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिटिंग में. सो आई जस्ट रिपीट बिफोर आई स्टैंड. सो इट इज एंकल मूवमेंट्स अप एंड डाउन, circling clockwise, anti-clockwise, pressing the knee with a small towel roll, then lifting the lower leg with a bolster, fine, and then using the same bolster in between the knee and squeezing the bolster or the ball, whatever you are using. So squeezing in and down at the same time. ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज आप लेट के भी कर सकते हो. The next exercise is sitting on a chair. So sitting on a chair. Again, take care of your posture. So you should not be sitting like this and doing the exercise. सीधे बैठ के you just have to straighten the knee. ठीक है, और pull the foot towards you. ऊपर उठाना नहीं है, चेयर पे से उठाना नहीं है. ठीक है, सिर्फ घुटने को सीधा करना है और फुट को अपनी ओर खींचना है. 1 2 3 4 and 5. You can alternate 1 2 3 4 5. अगेन अगर सही से कर रहे हो तो आपको ये वाला मसल ही टाइट लगेगा. So that is the correct way of doing it. ठीक है, काफी सारे लोग ऐसे उठा भी लेते हैं. When you are straightening, you just try to pull. Or what you do is you try to bend backward. वो चीजें कब होगी जब आपका जो पीछे का मसल है, बैक का मसल है, जिसको हम हैमस्ट्रिंग्स बोलते हैं, वो टाइट है. तो उसके लिए भी स्ट्रेचिंग्स रहती है. यूजुअली नी एक्सरसाइज के लिए आते हैं जब, तो वी टेक द हिप आल्सो इनटू कंसीडरेशन, द कोर आल्सो इनटू कंसीडरेशन. बट अभी जो मैं बता रही हूँ बेसिक एक्सरसाइजेस बता रही हूँ. तो अगर आपसे ये सीधे बैठ के नहीं हो रहा है, so make sure you hold the end of the chair and then do it. जितना होता है फिर उतना करिए. Don't try to compensate by going back. ठीक है, and the last exercise would be standing and just going on your toes. ठीक है, so standing and going on your toes. ठीक है, ये आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं. So that is it. These are the basic exercises for the knee. And as I told you, I will put a video where I'll be combining other exercises also of the knee and I'll be putting on my page. Okay, so I'll just take few questions now. Okay, so I guess we have answered all the questions. So we just end the session here. Thank you so much, Dr. Mohsin, for so much information that you have given. I will share Dr. Mohsin's contact details on my page after the session is done. And thank you so much, Doctor. Once again, Ramzan Mubarak. Ramzan Mubarak. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye.